नमस्कार, मैं अंशिका वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। आज हम आए हैं भारत शिक्षा एक्सपो 2025। ये एक्सपो है जहां पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ आए हैं शोकेस करने के लिए वो क्या कोर्सेज ऑफ़र करते हैं और क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर आए हैं, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसकी डेट है 24 से 26 अप्रैल। इसकी टाइमिंग है 10 to 6। ये हो रहा है एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। और आप चाहे तो मेट्रो से भी आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नॉलेज पार्क 2। और आप चाहे तो उन व्हीकल से भी आ सकते हैं, या पार्किंग फैसिलिटीज़ दी गई हैं। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं ब्रांड्स यहाँ पे कॉलेजेस क्या शोकेस कर रहे हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं भारत शिक्षा एक्सपो तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। आप डिजिटली करा सकते हैं या फिर मैनुअली फॉर्म में यहाँ पे स्कैनर दिया गया है। स्कैनर से डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप किस कैटेगरी से हैं, आप स्टूडेंट हैं, विजिटर हैं, डेलीगेट हैं या फिर टीचर हैं। और उसके बाद आपको बैजेस मिलेंगे एंड आप एंट्री ले सकते हैं हॉल में।
के नाम जान सकती हो? या रिनी माहेश्वरी, अनुभूमि। आज यहाँ पे आप क्या शोकेस करें भारत शिक्षा एक्सपो में? बेसिकली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एआई जनरेटेड हैं और उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हैं, रोबोट्स हैं, गेम्स हैं एंड ड्रोन्स हैं। सो ये सारे हमारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आज हम अपने स्टॉल पे शोकेस कर रहे हैं। और क्या कोर्सेज आप लोग ऑफर करते हो जीएल बजाज में? MBA, MCA, BTech, MTech, PGDM, so BBA, so BCA, and we are very soon starting with law as Law well as and well. medical as well. Yes. एंड क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हो आप लोग? So we have a very good placement record. हमारे पास मेजरली नेशनल इंटरनेशनल ऑल सॉर्ट ऑफ कंपनीज आती हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और लाइक देयर आर लॉट ऑफ देम। 95% हमारा प्लेसमेंट रेशियो है। सो आपको हम 95% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। सो इट्स लाइक सारे जो भी हमारे लाइक BGL बजाज प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। सो अगर कोई बच्चा आप लोग के कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ओके, सो वी हैव अ रिगरस स्ट्रीम जो उन्हें पहले तो एकेडमिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। सेकेंडली उनकी ट्रेनिंग जॉब प्लेसमेंट मतलब ट्रेनिंग फॉर प्लेसमेंट्स फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है, सो दैट थर्ड ईयर तक आते आते हमारा ऑलमोस्ट हर बच्चा प्लेस हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में आप लोग ज़्यादा बिलीव रखते हो या फिर थ्योरेटिकल ज़्यादा प्रोसेस रहता है? We basically maintain a fixed ratio of everything, theoretical, practical, everything. We don't want to miss on anything for our students. So there's a proper ratio for everything that our student goes through. एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? एडमिशन प्रोसेस लाइक सारे जो भी आपके कोर्सेज हैं उनका डिफरेंट है। लाइक कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होते हैं या कुछ आपके एकेडमिक के बेसिस पे होते हैं, कुछ आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होते हैं। तो वो लाइक सब जो भी प्रोग्राम्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं उनके सारे जो भी प्रोसेस है या क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो बेसिक नीड मैम क्या होती है? बेसिक परसेंटेज क्या रहती है कि अगर किसी को एडमिशन लाइक 60 अबव यू कैन से। 60 अबव। Yeah. तो वो स्पॉन्सर्ड के लिए होता है, नॉन स्पॉन्सर्ड की फीसेस क्या होती हैं? लाइक स्पॉन्सर्ड फीस जिसमें परसेंटेज कम होती है और नॉन स्पॉन्सर्ड जिसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है अगर स्टूडेंट की, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है? I'm not- information नहीं है इसका। हम लाइक वी डोंट गेट योर पॉइंट एक्चुअली। जो भी है सब बच्चों के लिए सेम ही होता है। 60 अगर हम 60 अबव बोल रहे हैं या 50 अबव बोल रहे हैं तो सारे बच्चों के जैसे लिए कुछ कॉलेजेस में ये फीचर होता है कि अगर स्पॉन्सर्ड हैं आप लोग, अगर परसेंटेज आपकी ज़्यादा है लाइक यू आर रेफरेंस से अगर आप आए हो। नहीं ऐसा रेफरेंस का कुछ नहीं है। सब बच्चों के लिए एक जैसा ही हम ट्रीट करते हैं। अगर हम आपको 60 अबव बोल रहे हैं तो इसका मतलब 60 अबव ही जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कोई वेबसाइट है आपकी? हाँ जी, वेबसाइट है एंड दे कैन ऑल्सो विजिट आवर कैंपस। हमारा वेबसाइट glbitm.org के नाम से दे कैन सर्च और वहाँ पे उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू एडमिशंस। थैंक यू मैम। Okay, thank you so much.
मैंने आपको इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ दिखाई, MBA की यूनिवर्सिटीज़ दिखाई। आगे भी मैं आपको और यूनिवर्सिटीज़ दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। I'm Miss Pritika Bawa. I'm a professor with National Institute of Fashion Technology, Delhi campus. एंड मैम आज यहाँ पर आप क्या शोकेस कर रहे हैं? We are here with our admissions team when we are talking about the kind of courses we have.
We have UG programs, we have PG programs. The UG programs have specializations at knitwear, leather, fashion, textiles, and communication. Accessory designs also, which we call it as lifestyle accessories. And then we have PG programs wherein there are 3 wings: design, management, and technology. So we are here with the information on that for the prospective students. एंड क्या कोर्सेज आप लोग ऑफर करते हो, उसमें प्रोसेस क्या रहता है फॉर एडमिशन? For the admission process, our admission process starts somewhere in November, where the forms come out. Somewhere in February, there's an exam, which is a written exam. And then we have situation tests for design students and PI and GD for the management students and postgraduate students. So once the student clears everything, then somewhere in July, the courses begin. कोई मिनिमम परसेंटेज होती है फॉर एडमिशन? Yes, we have the minimum slab we have is a student should have at least 50% in their 12th exams. That is the only criteria we follow. एंड मैम फॉर प्रैक्टिकल थ्योरी पार्ट जो आपका होता है एडमिशन प्रोसेस के बाद, उसमें आप लोग कैसा प्रोसेस रहता है? इन कोर्सेज क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं स्टूडेंट को? Courses, most of our courses are less on theory and more of practical work, and it's a hands-on work. Most of the departments do hands-on. So we have technical trainings also. We have hands-on training also. We have a bit of theory also. We don't have any course books or anything, but we have a very structured coursework which a student has to do. A student goes through a foundation program of 1 year and then goes into specialization of 3 years. That's a UG format. For PG, it's a 2-year program where there is no foundation program. The students already come with a graduation degree and they get into their specializations directly. मैम आप लोग कितने टाइम से भारत शिक्षा एक्सपो में एग्जिबिट कर रहे हैं? That is a question which I will not be able to answer because एंड कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको स्टूडेंट से? student response is very good. We've had a good footfall since yesterday and we're expecting a good footfall tomorrow also. एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती है? जैसे मैं देख सकती हूँ ये आपके फैशन स्टूडेंट का ही Yes. वर्क है. दैट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क दे हैव डन. Thank you so much. So what's the placement opportunities there? Placement opportunities, our students get placed, it's a centralized placement option which we have for all the students across the country. We have about 20 odd campuses across country, Delhi being the flagship campus. This what you can see here is more of practical, where if you focus on the lower part of the garment, a lot of embellishments which are done. This garment would have taken a lot of effort and sleepless nights for the students, and the result is inclusivity, where we're talking about a pregnant lady and a design for that, which Oh. usually is not done. क्योंकि प्रेगनेंसी में लड़कियां सोचती है फैशन नहीं हो पाएगा, हाँ. बट फैशन But तो look at this, that's everywhere. That's everywhere. एंड मैम आपकी कोई वेबसाइट है जिससे Yes. ऑडियंस स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर पाए? Yes, absolutely. You could contact, you could reach out to us on nift.ac.in and you'll get the entire information there. If you want to go to a specific campus website, from that main website, you can go to the campus website आपकी also. कैंपस की लोकेशन क्या है? In Delhi, we are in Hoskas, within the heart of the city, and we are across the country. We're in 20 different states. थैंक यू सो मच मैम. You're welcome. Thanks.
मैंने आज आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दिखाई इंजीनियरिंग की, MBA की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।